Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 25. In previous class we had discussed about the spray drying technique and introduction to spray drying, and in which we had discussed that there are three stages of spray drying. The first one was atomization of a liquid feed into fine droplets. The second stage is spray droplets mixed with heated gas stream and dried particles are produced by the evaporation of the liquid from the droplets. And the third stage is the final stage, which involves the separation of the dried powder from the gas stream and collection of these powders in a chamber. So in previous class we had discussed in detail about the first stage, that is of atomization, the process of selection of the atomizers. In today's class we will be continuing with the detailed discussion of the second and third stage. So the second stage is called as spray air contact and evaporation. Once the liquid is atomized, it must be brought into intimate contact with the heated gas for evaporation to take place equally from the surface of all droplets. जैसे लिक्विड एटमाइज होता है, लिक्विड की एटमाइजेशन के बाद वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है. ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली इन इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं विद द हीटेड गैस फॉर एवेपोरेशन, और ड्रॉपलेट्स में से लिक्विड की एवेपोरेशन हर तरफ से या हर सरफेस से इक्वली होती है. दिस कॉन्टैक्ट स्टेप टेक्स प्लेस विद इन अ वेसल कॉल्ड अ ड्राइंग चेम्बर. The heated gas is introduced into the chamber by an air dispenser, which ensures that the gas flows equally to all parts of the chamber. ये जो कांटेक्ट हो रहा है ड्रॉपलेट का विद द हीटेड गैस, ये विद इन अ वेसल होता है जिसे हम ड्राइंग चेम्बर कहते हैं. हीटेड गैस इस ड्राइंग चेम्बर में इंट्रोड्यूस की जाती है विद बाय एन एयर डिस्पेंसर, और ये एयर डिस्पेंसर ये इंश्योर करता है कि जो गैस फ्लो हो रही है वो इक्वली फ्लो हो ऑल पार्ट्स ऑफ द चेम्बर में. So the first thing which happens in this chamber is spray air contact. The way in which spray contacts the drying air is a critical factor in spray drying operations. Spray air contact is determined by the position of the atomizer in relation to the air inlet. Inlet air is introduced to the drying chamber via an air dispenser, which uses perforated plates or vane channels through which the gas is equalized in all directions. जिस तरीके से स्प्रे कांटेक्ट करता है विद द ड्राइंग एयर, ये क्रिटिकल फैक्टर है स्प्रे ड्राइंग ऑपरेशन का. स्प्रे एयर कांटेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है विद द बाय द पोजीशन ऑफ द एटमाइज़र इन रिलेशन टू द एयर इनलेट, यानी एटमाइज़र और एयर इनलेट की पोजीशन कैसी है. इनलेट एयर इंट्रोड्यूस की जाती है टू द ड्राइंग चेम्बर एयर डिस्पेंसर के थ्रू. एयर डिस्पेंसर परफोरेटेड प्लेट्स को यूज़ करता है या वेन चैनल्स को यूज़ करता है, जिससे गैस इक्वलाइज डायरेक्शन में पूरे वेसल में स्प्रेड होती है. इट इज़ क्रिटिकल दैट द एयर एंटरिंग द डिस्पेंसर is well mixed and has no temperature gradient across the duct leading into it. Otherwise, the drying will not be even within the chamber. एक क्रिटिकल पैरामीटर ये है कि जो एयर एंटर हो रही है डिस्पेंसर में वो वेल मिक्सड है और इसमें कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है अक्रॉस द डक्ट जो इसको लीड कर रही है इनटू द चेम्बर. अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट टूवर्ड्स द स्प्रेडिंग टू इट्स स्प्रेडेबिलिटी, तो ड्राइंग इवन नहीं होगी विद इन द चेम्बर. एयर डिस्पेंसर नॉर्मली
बिल्ट होता है ऑन इनटू द रूफ ऑफ द ड्राइंग चेम्बर, और एटमाइजेशन डिवाइस उसी एयर डिस्पेंसर के एडजेसेंट प्लेस की जाती है। Spray droplet movement is classified according to the dryer chamber layout and can be designated as co-current, concurrent or mixed flow. स्प्रे ड्रॉपलेट मूवमेंट को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ड्रायर चेम्बर लेआउट, और उसे हम 3 तरह की क्लासेस के अंदर डिफाइन या डिजिग्नेट कर सकते हैं। इट कुड बी कोकरेंट, कनकरेंट और मिक्स्ड फ्लो। Co-current flow is the configuration in which the spray and drying air pass through the dryer in the same direction। यानी co-current flow वो फ्लो होगा जिसमें स्प्रे और ड्राइंग एयर एक ही डायरेक्शन के अंदर पास करेंगे ड्रायर के अंदर। This arrangement is widely used and is ideal for heat sensitive products। Spray evaporation is rapid, the drying air cools accordingly, and overall evaporation times are short. The particles are not subject to heat degradation. In fact, low temperature conditions are achieved throughout the entire chamber in spite of very hot air entering the chamber। कोकरेंट फ्लो के अंदर स्प्रे और ड्राइंग एयर पास हो रही है थ्रू द ड्रायर एक ही डायरेक्शन के अंदर। ये अरेंजमेंट वाइडली यूज्ड होती है और आइडियल होती है फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए। स्प्रे एवेपोरेशन रैपिड है इस तरह की फ्लो के अंदर, कोकरेंट फ्लो के अंदर, और ड्राइंग एयर कूल होती है अकॉर्डिंगली, और ओवरऑल एवेपोरेशन टाइम इज़ शॉर्टर। पार्टिकल्स जो ड्राई हो रहे हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू हीट डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन टू विच दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द हीट। लो टेम्परेचर कंडीशंस अचीव होती हैं थ्रू आउट द एंटायर चेम्बर इन स्पाइट ऑफ वेरी हॉट एयर एंटरिंग द चेम्बर। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज counter current flow is the configuration in which the spray and the air enter at the opposite ends of the dryer। This arrangement has excellent heat utilization। Counter current flow is used with nozzle atomization and is well suited for meeting the final spray dried properties and non-heat sensitive materials। Counter current flow is the configuration in which the spray and the air enter at the opposite ends of the dryer। काउंटर करंट फ्लो के अंदर स्प्रे और एयर ऑपोजिट एंड्स से एंटर होती हैं ड्रायर में। ये अरेंजमेंट एक्सीलेंट हीट यूटिलाइजेशन की अरेंजमेंट है। काउंटर करंट फ्लो को हम यूटिलाइज़ करते हैं जब नोज़ल एटमाइजेशन रिक्वायर्ड होती है और जो फाइनल स्प्रे ड्राइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स की हैं। यानी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के अंदर हम कोकरेंट फ्लो यूटिलाइज़ करते हैं एंड नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के अंदर हम काउंटर करंट फ्लो को प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके अंदर हीट यूटिलाइजेशन इज़ एक्सेलेंट। द थर्ड टाइप ऑफ फ्लो इज़ called as mixed flow। Mixed flow is the configuration in which both co-current and counter-current flows are incorporated। The advantage of this type of arrangement is that the coarse free-flowing products can be produced in relatively small drying chambers। In mixed flow systems, the powder is subjected to higher particle temperature। A mixed flow system can be integrated with a fluid bed drying chamber when lower particle temperatures are necessary। Mixed flow के अंदर दोनों तरह की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है, कोकरेंट एंड काउंटर करंट। एडवांटेज इस टाइप के अरेंजमेंट का ये है कि कोर्स फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट में, और इसमें रिलेटिवली स्मॉल साइज़ के ड्राइंग चेम्बर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिक्स फ्लो सिस्टम्स के अंदर पाउडर हायर पार्टिकल टेम्परेचर पर सब्जेक्ट होता है
और मिक्स फ्लो सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद अ फ्लूइड बेड ड्राइंग चेम्बर जब हमें लोअर पार्टिकल टेम्परेचर्स चाहिए. Sprayer contact design can be selected according to the required particle size and the temperature to which the dried particle can be subjected. स्प्रे एयर कॉन्टैक्ट डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज़, जितना पार्टिकल साइज़ चाहिए और इतनी अमाउंट के अंदर ड्राइड पार्टिकल्स को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट या टेम्परेचर दिया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ लो प्रोडक्ट टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, a co-current rotary atomizer is selected for producing fine particles, while a counter-current pressure atomizer is preferred for obtaining coarser particles. If coarse particles with predetermined porosity and bulk density properties are desired, a counter-current pressure nozzle atomizer is well suited as high product temperature can be maintained for obtaining the desired porosity and bulk density of the resulting product. For obtaining coarse spray dried particles of heat-sensitive materials, a mixed flow nozzle system can be selected. लो प्रोडक्ट टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है हर वक्त तो कोकरेंट रोटरी एटमाइज़र सेलेक्ट किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल्स, जबकि हम काउंटर करंट प्रेशर एटमाइज़र उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोर्सर पार्टिकल्स डिज़ायर्ड होते हैं. अगर कोर्सर पार्टिकल्स की पोरोसिटी और बेल्ट डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ प्री डिटरमाइंड हैं तो काउंटर करंट प्रेशर नोज़ल एटमाइज़र वेल सूटेड होता है, बिकॉज हाई प्रोडक्ट टेम्परेचर मेंटेन हो सकती है in order to obtain the desired porosity and bulk density of the resulting product. अगर कोर्स स्प्रे ड्राइड पार्टिकल्स चाहिए और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स यूटिलाइज हो रहे हैं तो मिक्स्ड फ्लो नोजल सिस्टम इज सिलेक्टेड. The second part of spray drying and air contact is drying. This is the largest and most obvious part of spray drying system in the drying chamber. This vessel can be tall and slender or have a large diameter with a short cylindrical height. Selecting these dimensions is based on two process criteria that must be met. ड्राइंग में जो वेसल यूज़ हो रही है ड्राइंग के लिए वो टॉल या स्लेंडर हो सकती है और इसका लार्जर डायमीटर होता है विद शॉर्टर सिलेंडर हाइट. इन डायमेंशंस को सिलेक्ट करने के लिए दो प्रोसेस क्राइटेरियाज को मीट करना होता है. First is the vessel must be of adequate volume to provide enough contact time between the atomized cloud and the heated gas. This volume is calculated by determining the mass of air required for evaporation and multiplying by the gas residence time which testing or experience dictates. पहला क्राइटेरिया क्या है कि वेसल का वॉल्यूम एडिक्वेट होना चाहिए ताकि वो एक इनफ कांटेक्ट टाइम प्रोवाइड कर सके बिटवीन द एटमाइज क्लाउड और हीटेड गैस में. वो एटमाइज क्लाउड जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की वजह से बन रहा है और हीटेड गैस जो एयर चेम्बर से आ रही है. ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है बाय डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर एवेपोरेशन, यानी कितनी अमाउंट के अंदर एयर रिक्वायर्ड है एवेपोरेशन के लिए, एंड दिस amount of air required for evaporation is multiplied by the gas residence time, for how long the gas would reside in that particular chamber, which is actually done by testing or which can be calculated by experience as well.
The second criteria is that all droplets must be sufficiently dried before they contact a surface. This is where the vessel shape comes into play. Centrifugal atomizers require larger diameters and shorter cylinder heights. In contrast, nozzle atomizer systems must have narrower and taller drying chambers. सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि ड्रॉपलेट्स सफिशेंटली ड्राई हो जाए बिफोर दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, यानी ये सरफेस ऑफ सिलेंडर के साथ इन कांटेक्ट आएँ, ये कलेक्टिंग चेम्बर में जाएँ, उससे पहले उनको सफिशेंटली ड्राई होना है. ये सेकेंड क्राइटेरिया वहाँ मीट होता है जहाँ पर वेसल की शेप आती है. सेंट्रीफ्यूगल एटमाइजर्स में लार्जर डायमीटर्स और शॉर्टर सिलेंडर हाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज एटमाइज़र राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो आपको डायमीटर बड़ा चाहिए होता है, बिकॉज एटमाइज्ड स्प्रे डिसइंटीग्रेट होगा इन एवरी डायरेक्शन. शॉर्टर सिलेंडर हाइट्स भी चल जाएंगी, बिकॉज एटमाइज्ड स्प्रे जो मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और रोटेट कर रहा है. अगर हम इसे कंपेयर करें नोज़ल एटमाइज़र से, तो नोज़ल एटमाइज़र्स में स्प्रे की डायरेक्शन इज़ वर्टिकल. इसी वजह से नैरोअर सिलेंडर रिक्वायर होता है विद टॉलर ड्राइंग चेम्बर्स, एंड दिस विल एक्चुअली keep the droplets away from the surface, and the second criteria would be met. The third part is drying gas. In pharmaceutical application of spray drying, the feedstock can be prepared by suspending or dissolving the product to be spray dried in water. However, the utilization of a wide variety of organic solvents in feedstock preparations is also common. Alcohols such as ethanol, methanol, and isopropanol are preferred organic solvents in spray drying of pharmaceuticals, although other organic solvents such as ketones are also used in other industries. Often, the synthesis process upstream from the drying step determines the solvent selection. The drying characteristics of the solvents are also important. For example, a solvent with a low boiling point may be the only choice for heat sensitive materials. Pharmaceutical applications spray drying में feed stock को हम prepare कर सकते हैं by suspending और dissolving the product जिसे आपने spray करना है in water, यानी वाटर एज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज़ होता है फॉर डिज़ोल्विंग और सस्पेंडिंग. लेकिन बहुत जगहों पर बहुत सारे ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स में वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूज़ होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फीड स्टॉक, और मोस्टली अल्कोहल्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं. Most common alcohols are ethanol, methanol, and isopropanol that is preferred for spray drying of pharmaceuticals for the preparation of feedstock for spray drying of pharmaceuticals. लेकिन इसके अलावा कीटोन्स और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं. सिंथेसिस प्रोसेस में फ्रॉम द ड्राइंग स्टेप एक्चुअली डिटरमाइन करता है सॉल्वेंट सिलेक्शन पे. ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, उसे आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं फॉर हीट सेंसिटिव मटीरियल्स. Although evaporating organic solvents by a spray drying process is very efficient due to the resulting shorter residence time as compared to the evaporation of water, the risk of explosion makes the use of these solvents very hazardous. Therefore, an inert gas, usually nitrogen instead of air, must be used as drying gas for the evaporation of the solvents. Use of inert gas requires the use of a closed cycle system
for spray drying in order to recover the solvent and to limit the gas usage. However, for small drying tests and laboratory work, the nitrogen can be used without recirculation using a carbon bed on the exhaust gas to collect the solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की इवेपोरेशन स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस है, एक एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन बिकॉज शॉर्टर रेजिडेंस टाइम रिक्वायर्ड होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लेकिन रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन बढ़ जाता है बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एक्सप्लोड। इसी वजह से हम एयर के बजाय इनर्ट गैस यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एयर एज अ ड्राइंग गैस particularly for the evaporation of organic solvents. Inert gas like nitrogen का usage closed cycle system के अंदर हो सकता है for spray drying in order to recover the solvent and to limit the gas usage. स्मॉल ड्राइंग टेस्ट या लेबॉरेटरी वर्क के अंदर हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं विदाउट रीसर्कुलेशन, लाइक यूजिंग अ कार्बन बेड on the exhaust gas to collect the solvent. Dried powder segregation is the third step or the final stage, which involves the separation of the dried powder from the gas stream and collection of these powders in a chamber. Powder separation from the drying air follows the drying stage. In almost every case, spray drying chambers have cone bottoms to facilitate the collection of the dried powder. Two systems are utilized to collect the dried product. Powder separation drying air से follow करती है, drying air से करते हैं हम after drying stage. हर केस में स्प्रे ड्राइंग चेम्बर मोस्टली कोन शेप्ड या कोन बॉटम्स के साथ होते हैं। ये कोन बॉटम्स फैसिलिटेट करती हैं कलेक्शन ऑफ ड्राइड पाउडर्स को। दो तरह के सिस्टम्स यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम व्हेन कोर्स पाउडर्स आर टू बी कलेक्टेड, दे आर यूजुअली डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कोन थ्रू अ suitable airlock such as a rotary valve. The gas stream, now cool and containing all the evaporated moisture, is drawn from the center of the cone above the cone bottom and discharged through a side outlet. पहले इस टाइप के सिस्टम के अंदर जहाँ पर कोर्स पाउडर्स कलेक्ट किए जाते हैं, इस कोर्स पाउडर्स यूजुअली डिस्चार्ज होते हैं डायरेक्टली बॉटम ऑफ द कोन में, और इनका डिस्चार्ज सूटेबल एयरलॉक के थ्रू होता है यूजिंग अ रोटरी वॉल्व। गैस स्ट्रीम जो कूल हो चुकी है अब तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस एंड इट कंटेन्स ऑल द इवेपोरेटेड मॉइस्चर इन इट, इसको ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोन अबव द कोन बॉटम, and this is discharged through the side outlet. In effect, the chamber bottom acts as a cyclone separator. Because of the relatively low efficiency of collection, some fines are always carried with the gas stream. Chamber bottom cyclone separator का काम करता है। लो एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन की वजह से कुछ फाइन पार्टिकल्स गैस स्ट्रीम के साथ ही चले जाते हैं। कोर्सर पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन फाइन पार्टिकल्स गैस स्ट्रीम के साथ ही चले जाते हैं। These must be separated in a high efficiency cyclone followed by a wet scrubber or in a fabric filter or bag collector. फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हाई एफिशिएंसी साइक्लोन यूज़ किए जाते हैं, जिनमें वेट स्क्रबर्स या फैब्रिक फिल्टर्स या बैग कलेक्टर्स लगे हुए होते हैं। फाइन्स collected in the dry state, bag collector are often added to the large powder stream or recycled. When very fine powders are being produced, this side outlet is often eliminated and the dried product together with the exhaust gas is transported
from the chamber through a gooseneck at the bottom of the cone. The higher loading of entrained powder affects cyclone design but has little or no effect on the bag collector size. जब वेरी फाइन पाउडर्स रिक्वायर हैं या वेरी फाइन पाउडर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्प्रे ड्राइंग से अलॉन्ग विद कोर्स पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स, तो साइड आउटलेट एलिमिनेट की जाती है, जिससे आप एक्चुअली गैस स्ट्रीम को पास कर रहे हैं या कैरी अवे कर रहे हैं. गैस एग्जॉस्ट गैस ड्राइड प्रोडक्ट के साथ ही कलेक्ट होती है चेम्बर में, which is actually associated with the gooseneck at the bottom of the cone. The higher loading of the entrained powder affects cyclone design. जितनी loading होगी entrained powder की वो cyclone design पे affect करेगा, but इसका बैक कलेक्टर के साइज के ऊपर कोई effect नहीं होता. Second type of system, total recovery of. In the second type of system, total recovery of dried products takes place in the separation equipment. This type of system does not need a product conveying system. Therefore, the separation efficiency of the equipment becomes very critical. Separation of dried product from the air influences powder properties by virtue of the mechanical handling involved during the separation stage. Excessive mechanical handling can produce powders with a high percentage of fines. सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर जो टोटल रिकवरी है ड्राई प्रोडक्ट्स की, वो एक सेपरेशन इक्विपमेंट के अंदर होती है. इस सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट कन्वेइंग सिस्टम रिक्वायर नहीं होता, इसी वजह से सेपरेशन एफिशिएंसी इक्विपमेंट की क्रिटिकल है. सेपरेशन ड्राई प्रोडक्ट्स की एयर से पाउडर प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती है. जिस तरह से मैकेनिकली हैंडल किए जाते हैं पाउडर्स ड्यूरिंग सेपरेशन स्टेज. अगर एक्सेसिव मैकेनिकल हैंडलिंग हो रही है तो पाउडर्स में फाइन पाउडर्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी. Process layouts. The most common and cost-effective layout utilizes a high-efficiency cyclone and scrubber, which is represented over here in figure 7a. This is high-efficiency cyclone scrubber, which has a cone and cyclone scrubber. In this layout, the loss of very fine particles to the atmosphere cannot be prevented. If the desired particle size of the spray dried product is too small to be recovered by cyclone and scrubber systems, then the use of a layout employing a bag filter is recommended. Just shown over here. These are bag filters and these are cyclone scrubbers. So that's all from the spray drying and the whole pharmaceutical process. In next class we'll be starting a new granulation technique. Till then, post your questions or queries on LMS. Take care of yourself and everyone around you. Thank you. Allah Hafiz.